Hello, dear students. I hope you're all doing well. You have written your EIT exam this month of this August month, and I hope you have all done it very well. But still, there might be some questions in your mind where we need some discussion. So, I have taken those kind of questions where you will need some assistance. Okay. So, nearly I have taken 20 to 22 questions in this discussion of 1 hour. Okay, so we will discuss it in this session. If you have any doubts furthermore, you can ask to your respective biology teachers. Okay, so we are going to start now. Please be attentive. Okay, chalo. So meanwhile, when I have, when I'm showing you the question, read the options, keep it in mind, and when I discuss, so just verify it, check it that whether your answer is correct or not. Okay, so please be quick with it. Take a pen and paper with you and do it simultaneously with me. Okay, so let's move ahead. So the question paper code is JS800924. Okay, so it's the same one which you have written like 2 to 3 days ago. Okay, so we'll move now. So there's a first question on the screen. When gynoecium is present in the topmost position of thalamus, the flower is known as inferior, epigynous, perigynous, hypogynous. Okay, so which do you think is the correct answer here? I'm going to give you 30 seconds. Yes, I know that in the screen it shows 1 minute, but still, I'm going to give you 30 seconds. Okay, after 30 seconds, we are going to discuss it. Okay, yes. So as you know, we talk about the whorls of, the flower. Okay, so flower has so many whorls. Okay, and they will be arranged on thalamus. Okay, so everything will be arranged on thalamus. So how exactly it is arranged, that will indicate these, types here. Okay, inferior, epigynous, perigynous, and hypogynous. Okay, so we will check here in the solution. So the position of gynoecium, that is female reproductive part of the flower, relative to other floral parts is significant in classifying flower types. Okay, so the very first type is epigynous. Okay, so what do you think an epigynous is? Here, the gynoecium is positioned at the topmost position on the thalamus, while the other floral parts are attached above it. Okay, so the gynoecium के ऊपर all the other floral parts are attached. Okay, so this means the ovary is inferior and the other floral parts are superior to it. Okay, so what is inferior then? So inferior refers to the position of ovary. Okay, ये position का ovary represent करती है बेटा. Here you will understand the overall arrangement of the floral parts. Okay, so inferior can also be referred to as epigynous only. ओके तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं है एपिगैनस एंड इंफीरियर दे आर नॉट टू सेपरेट दे आर सेम थिंग okay now coming to perigynous here the flowers have gynoecium in the central part with other floral parts attached around it okay gynoecium in the central and other floral parts attached around it this is perigynous okay this is half and half structure okay तो ये होता है perigynous then what is hypogynous here the gynoecium is positioned above the other floral parts मतलब other floral parts will be there so above that the gynoecium is placed so this is called as superior ovary how epigynous is called as inferior ovary hypogynous can be called as superior ovary okay so now if you look at the question it says gynoecium is present in the topmost position of the thalamus okay when the gynoecium is topmost then other floral parts will be surrounding it okay or you can say below surrounding it will be below so here you can say the flower is known as hypogynous okay so that is superior ovary now coming to next question assertion and reasoning question this is Selaginella and Salvinia are homosporous reason says in Selaginella and Salvinia different kind of spores are produced okay I'm going to give you 30 seconds so look at the options read the question once again and keep the option in your mind okay, when we discuss, just tally it with your, understanding. Yes. And YouTube students can answer me in the chat also. Okay, those who have joined through YouTube, you can answer the,
choose an option according to you which is correct. You can answer it in the live chat. That is also possible. Okay. So I have given enough time. It doesn't need that much of time. Okay. इसके लिए इतना time की जरूरत नहीं है. देखो बेटा, this question is directly taken from NCERT. Okay, आपकी NCERT कहती है all the spores of similar kinds in majority of pteridophytes are such plants are called as homosporous. ठीक है, जो majority pteridophytic plants होते हैं बेटा, these are homosporous. But there is two genera. Okay, genera like Selaginella and Salvinia, these have two different kinds of spores. Okay, macrospores and microspores, that is a difference in Selaginella and Salvinia, and hence we call them as heterosporous. Okay, hetero means different spores, homo means same kind of spores. So most of the pteridophytes have same kind of spores, but two genus are there, Selaginella and Salvinia, which have heterosporous. This statement is directly taken from NCERT. Okay, so if you see here, okay बेटा, तो आपको क्या पता होना चाहिए? The Selaginella and Salvinia are heterosporous, not homosporous. Hence, assertion is wrong. Okay, in Selaginella and Salvinia, different kind of spores are produced. This is correct. That means it is heterosporous only. Okay, so here you can answer as C, that is A is not correct and R is correct. Reason is correct, but assertion is wrong. Hence, C is the answer for this question. Okay, I hope it is clear. Chalo, next question. Okay, I want to say this. This question has been asked in AIT 1 also, and I had discussed it also. ये AIT क्वेश्चन फर्स्ट में भी आया था, AIT फर्स्ट में, दैट इज लास्ट मंथ. Okay, there also we have discussed it. Again, I kept it because I want to check that all of you have corrected it in this month. Okay, so question is, read the following statement. Lower the taxon, more are the characteristics that the members within the taxon share. Okay, order is the assemblage of genera which exhibit few similar characters. Cat and dog are included in the same family Felidae. Binomial nomenclature was introduced by Carolus Linnaeus. You have to choose which are the statements. Those are not correct. Okay, not correct statements आपको choose करना है. ठीक है, I'm going to give you 30 seconds again. ठीक है, आप 30 seconds लीजिए, read the statements once again and choose the answer. Okay. Yes. Take some time, no need to hurry. Okay. Look at the statements, try to understand and analyze them. But this question, same question was asked in AIT 1. Okay. Chalo. So now if you see the solution here, okay, so first हम आते हैं बेटा. See, if you look at the taxonomical hierarchy, okay, it starts with kingdom. Okay, kingdom से start होके species में खत्म होता है. Okay, so that is the hierarchy. Clear? अब बेटा, if you see lower the taxon, मतलब if you see this species, genus, family, okay, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, in these below areas, वहां पे more characters, more similar characters will be found. Okay, more common characters, more similar characters. As you move above the hierarchy, okay, as you move from species to kingdom, in the areas of kingdom and phylum division, वहां पे less common characters होते हैं, less similar characters होते हैं. Okay, so that you need to know. Here, if you say lower the taxon, more are the characters that the members within the taxon share. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है आप समझिए. ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. लोअर द टैक्सॉन, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. Okay, more of the characteristics the members within the taxon share. That means it is a correct statement. This is a correct statement. Okay, so as you move further, the less number of characters will be shared within the hierarchies. Okay, now order is the assemblage of genera which exhibit few similar characters. No. Okay, order is the assemblage of family, not genera. Okay, so अब देखो बेटा, when you see the hierarchy, it starts with species. Okay, species, genus, family, and then order. Okay, so family का जो assemblage होता है वो order होता है. Okay, order is the assemblage of family that exhibits few similar characters. ठीक है, so second statement is wrong statement. Cat and dog are included in the same family? Definitely not. These are not included in the same family. Okay, so जो dog है बेटा वो कैनिडे में आता है, जो cat है वो फेलिडे में आता है. The cat is felidae, dog is canidae, hence third statement is also incorrect.
Binomial nomenclature was introduced by Carolus Linnaeus. That is true. Okay, this is true. Okay, this is very easy. This is true. So now you have to choose which are the wrong statement, which is the correct. तो आपको बेटा not correct को click करना है. तो second and third statements are not correct. Hence your answer would be D. ठीक है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा D. Okay, second and third statement are wrong statements. Clear? Chalo. So that's what is written here. I told you, right? So cat is Felis. Okay, whereas the dog is Canidae. Okay, that belongs to Canis family. That is Canidae. Okay, and here if you see order being the higher category is the assemblage of families. I told you, right? Order is the assemblage of families that exhibit few similar characters. Okay, so next question says placentation in tomato and lemon is. Okay, so first you need to know what is placentation and you need to know what are the types of placentation, and then you need to understand these example comes under which category of placentation. Okay, so I'll give you some time, read the question, read the options, and then make sure that you choose a proper answer. Okay, so I have given you enough time. So let's understand now. Placentation in tomato and lemon. You have to tell me placentation is of which type in tomato and lemon. So option are parietal, marginal, free central, and axile. So what is placentation? I told you, right? So placentation refers to the arrangement of ovules within the ovary. So as you know, before fertilization, ovules are present and ovary is present. After fertilization, ovules will become seed and ovary will become fruit. ठीक है, तो यही तो होता है. तो यहाँ पे देख लो, in both tomato and lemon, ovules are attached to central column in a multilocular ovary, which is a characteristic feature of axile placentation. So if you see a lemon or a tomato, this is a type of axile placentation. ठीक है, so the ovules are attached to central column in multilocular ovary. See here, these are attached in a central column in the multilocular. There are many locules. Okay, so locules are nothing but the cavity. Okay, the empty space that is present inside the ovary. Okay, so that is axile placentation. There are others also. Okay, marginal placentation is there. Okay, then marginal you will see that in the pea pod. Okay, pea pod में आप देखते हो बेटा. Okay, and then parietal is there, that is seen in cucumber. Okay, so free central is there. Okay, dianthus. तो ये सारे बहुत सारे examples हैं, वो आप देखोगे. Okay, that is present in your NCERT. Please check over it. Okay, so coming to next question. How many matching are correct? Okay, so you have to tell me now. Look at the options. Okay, so you have here two columns. Okay, so which has two chambered heart and three chambered heart, and in the right column you will find the matchings. So you have to tell me which one is correct match, which one is a wrong match. Okay, so you have to tell me. Okay, so I have given you enough time. Okay, so let's check now. So we will look at the solution here. So two-chambered heart is visible in fishes. That is correct. Okay, that is correct. It is given in your chapter Animal Kingdom. You will check. You have to check there. So fish has two-chambered heart consisting of one atrium and one ventricle. एक auricle रहेगा, एक ventricle रहेगा. ये characteristic feature होता है fishes का. They have two-chambered heart. Okay, that is clear. Now coming to three-chambered heart. Here two auricles and one ventricle is present. This is also correct. ओके बेटा, जो थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है उसमें दो ऑरिकल्स होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है. हेंस द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. नाउ लेट्स लुक इनटू द स्टेटमेंट 3. ओके, तो यहाँ पे देखो बेटा, जो यहाँ पे है थ्री चेम्बर्ड हार्ट, टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्फीबियंस एंड मोस्ट रेप्टाइल्स. ओके, चलो. So here two ventricles and one auricle. No, this is incorrect.
Okay, so this is incorrect. We have, in three-chambered heart, we have two auricles and one ventricle. Okay, now, so three-chambered heart, all reptiles and amphibians, this is partially incorrect. Why? Because all amphibians are three-chambered heart. That we sure. Okay, that we are sure of. But coming to reptiles, there is an exception of crocodile. Okay, crocodile belongs to reptile, but it has four-chambered heart. That is why we cannot say all reptiles have three-chambered heart because crocodile has four-chambered heart. Hence, so 3 and 4 are wrong statements, 1 and 2 are correct statements. So how many correct matches you found? Two correct matches, this and this. Hence, the answer for this question is B. Okay, so the answer for this question is B. So two statements are correct. So that is clear. Okay, chalo, next question. Match column 1 and column 2 and choose the correct option. Okay, so there are two columns, column 1 and column 2. So in column 1, you can see Phaeophyce, Rhodophyce, mosses, and then Pteridophytes. In column 2, there is a descriptive statement that has been given. Have a elaborate mechanism of spore dispersal, first terrestrial plant with vascular tissue, phloem and xylem, asexual reproduction by biflagellate zoospores, Polycephonia, Porphyra, Gracilaria. I'm giving you some time here. Okay, आप 40 seconds तक time ले सकते हो. Look at the column 1 and column 2 and choose the option. Okay, whichever you think as a correct option, please make sure that you give that in the chat box. Okay, so YouTube students can write in the live chat. Yes, it's very easy. If you match one or two options, then you can crack third and fourth also. Okay. So I think I have given enough time. Let's work here. Okay. So if you see beta, यहाँ पे देखो pteridophytes. So pteridophytes are called as what? You have to tell me pteridophytes are the first terrestrial plants. Okay, तो यहाँ पे देखो this is correct one. D2. ये तो बहुत easy है बेटा. See, bryophytes are amphibians, pteridophytes are the first terrestrial plants which show the vasculature, that is xylem and phloem. Okay, pteridophytes का done हो गया. Now mosses. So beta, mosses have a very elaborate mechanism for spore dispersal. If you look at the polytrichum and funaria, ओके उसके पास सीटा होता है, सीटा के अंदर स्पोर्स होते हैं एंड दे आर अ वेरी गुड मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल. Okay, polytrichum and funaria of mosses, if you see, that is a very good example. So C and D you have chosen. Now examples of rhodophyce. Okay, बेटा मैंने आपको बताया था when I have taught you about the plant kingdom, तो मैंने आपको बताया था examples in rhodophyce is what? P square and G square. So P square में क्या आता है in rhodophyce? Polycephonia, Porphyra, Gracilaria and Gelidium. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं रोडोफाइसी के. अब ये तीन आपने देख लिया तो बचा कौन? फियोफाइसी. फियोफाइसी में नॉर्मल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है विद द बाइफैचुलेट जूस्पोर्स. ठीक है, सच एन इजी क्वेश्चन. ओके, बट आपको एकदम देखने पे लगेगा कि ये तो डिफिकल्ट है. नहीं, इफ यू चूज वन वन आफ्टर अनदर तो इट विल बिकम इजियर फॉर यू. सो इफ यू सी A3, okay, A3 that is correct. Okay, so B4, huh? C1 and D2. Okay, A is correct, but look at the other options. A4 no, A4 no, A4 no. Okay, so A is 3. तो यहाँ पे देखो एक ही ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया. Okay, so A3 that is so correct, and then B4, C1 and D2. Okay, I hope this is clear to you. So यहाँ पे solution है. If you want, you can check it out. So Phaeophyce are the asexual reproduction by biflagellate zoospores. Okay, so Phaeophyce means nothing but brown algae. So Rhodophyce is the red algae that includes many examples. I told you, right? Polycephonia, Porphyra, Gracilaria, and then Gelidium. Okay, mosses, they have elaborate mechanism of spore dispersal. They have complex mechanisms. Okay, so mosses comes under bryophytes. You can take the example of Polycephonia and Funaria. Okay, so sorry, not Polycephonia, Polytrichum. Polytrichum and Funaria में आप observe करिए बेटा, जो सीटा होता है, okay, तो that capsule, तो सीटा के ऊपर जो कैप्सूल आता है उसमें वो डिस्पर्सल का जो मैकेनिज्म है, that is a very complex one. If you see in a such a lower
organismic plant. Okay. So pteridophyte, these are the first terrestrial plants with vasculature, xylem and phloem. Okay, very easy. Now coming to next question. Match the column 1 and column 2 and choose the correct option. So column 1 says placentation, estivation, inflorescence, then flower. Okay. So column 2 says arrangement of flowers on the rachis, modified shoot for sexual reproduction, arrangement of various whorls in the bud, and then arrangement of ovules within an ovary. Okay, I'll give you 30 seconds. Please look at the option and the columns and make sure that you choose the correct answer. Okay, take some time. जी, बताइए. Placentation is there, estivation, inflorescence, and then flower. Okay, so we are going to look at the solution now. तो यहाँ पे देखिए बेटा. So what is placentation? Just now we saw like few minutes ago. Okay, placentation is the arrangement of ovules within an ovary. Okay, ovary के अंदर जैसे ovules arrange होते हैं उनको हम बुलाते हैं placentation. Okay, what is estivation? Here arrangement of various whorls in the bud. Okay, so arrangement of various whorls in the bud. And inflorescence, if you see, arrangement of flowers on the rachis. Okay, rachis are also called as main stem. ओके तो यूजुअली बेटा एक स्पेसिफिक वर्ड मैं आपको दूं कि इन्फ्लोरेसेंस आर अरेंज्ड ऑन अ स्टॉक कॉल्ड एज पेडंकल. ओके, पेडंकल के स्टॉक में वो अरेंज होता है बट हम उसको कॉमन भाषा में रैचेस भी बुला सकते हैं या फिर मेन स्टेम भी बुला सकते हैं. ठीक है. नाउ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दिस इज द परफेक्ट definition for flower. Okay, now if you see which is the correct answer is T. Okay, that is A for placentation, arrangement of ovules within an ovary. Okay, what is estivation? Arrangement of various whorls in the bud. Okay, what is inflorescence? Arrangement of flower on the rachis. What is flower? It's a modified shoot for sexual reproduction. Okay, hence the answer for this question is D. Okay, next question. Read the given statements regarding androecium of a flower and select the incorrect ones. You have to select the incorrect ones. Okay. So statement says stamen comprises of a stalk-like style and knob-like terminal anther. Anther is usually dithecous, having two lobes attached by a sterile connective tissue. Staminode is an underdeveloped male reproductive part, but bears functional pollen grains. Okay, so options are A, B, C, D. Please look at the question, read the statements, and try to guess the correct answer. Okay, I'm giving you 30 seconds. Please make sure your answer is correct. Okay, so I have given you enough time. So let's discuss here. So it is asking, the question is about regarding the androecium of flower. So you know androecium is the male reproductive part of the flower. Okay. So here it says stamen comprises of stalk-like style. No, definitely not stalk-like style. It's a filament and knob-like terminal anther. ओके वो क्या है बेटा स्टाइल नहीं है फिलामेंट है. नाउ एंथर इज यूजुअली डाइथिकस. ओके इट इज यूजुअली डाइथिकस. आप देखो बट having two lobes attached by sterile connective tissue. This is also correct. ये भी ठीक है because we have read in the NCERT anther is usually dithecous and each one have the two lobes which are attached to the connective tissue which is made up of parenchyma cells. Okay, that connective tissue is sterile. It doesn't do anything. It doesn't have any reproduction role, but it is just a point of attachment. Okay. Staminode is an underdeveloped male reproductive part that bears functional pollen grains. No, staminode is not a male reproductive part.
ओके, तो ये बिल्कुल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, दिस इज अ स्टेराइल कंडीशन। स्टैमिनोड को हम स्टेराइल कहते हैं। इफ यू सी हियर, सी स्टेटमेंट वन, आई टोल्ड यू लाइक इट्स अ स्टॉक लाइक फिलामेंट एंड नॉब लाइक anther. Okay, so style is a part of pistil, not stamen. So statement one is incorrect. Okay. Then statement two. Anther is usually diathecous having two lobes attached by sterile connective tissue. This is also correct. ये correct statement है. Now staminode is underdeveloped. No, देखो यहाँ पे staminodes are sterile. These are non-functional and do not bear pollen grains. एकदम sterile होते हैं. Staminodes are sterile, non-functional. They do not bear pollen grains. ठीक है. So statement two and one are incorrect. ओनली द स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, दिस इज आस्किंग यू टू सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। तो आपके इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं बेटा, दैट इज वन एंड थ्री, हेंस सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In the given below example, how many plants in which persistent calyx is present? Tomato, brinjal, asparagus, aloe, tulip, petunia, pisum, soybean, gram, and sasbania. Okay, take some time, look at the options. It's very easy. You just, you must remember the families which will show this character of persistent calyx. Okay. Very easy question. Okay, so first we have to discuss what is persistent calyx. बेटा, जो persistent calyx है ना, after the fertilization also the calyx will not wither off, will not fall off, it is still attached to the fruit. ठीक है, अब क्या होता है बेटा, अब देखो, बिफोर फर्टिलाइजेशन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सेपल्स, पेटल्स, ओके, देन सारे जो स्टेमन के पार्ट्स होते हैं, पिस्टल के पार्ट्स होते हैं, एवरीथिंग इज प्रेजेंट बिफोर फर्टिलाइजेशन। बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एक्सेप्ट द वोवरी एंड वोवल्स, एवरीथिंग विदर ऑफ। ओके, जो भी है वो सारा झड़ जाता है। बट यहाँ पे कुछ फैमिलीज ऐसे हैं जिनमें फ्रूट में जो केलिक्स है, ओके, जो सेपल्स हैं वो विदर ऑफ नहीं होते, दे आर परसिस्टेंट। ओके, वो अभी भी लगे हुए होते हैं फ्रूट के साथ। ओके, सो यू हैव टू चूज विच आर दोस। तो हियर यू कैन सी persistent calyx आर अ फीचर ऑफ सोलनेसी फैमिली। ओके, सोलनेसी फैमिली में आपको फीचर देखने को मिलता है, जिसके एग्जांपल्स हैं टमेटो, ब्रिंजॉल एंड पिटूनिया। ओके, तीन ही एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी, टमेटो इज देयर, ब्रिंजॉल इज देयर एंड पिटूनिया, हेंस योर आंसर वुड बी थ्री, दैट इज बी। ओके, तीन यहाँ पे ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं जिनमें परसिस्टेंट कैलिक्स दिखता है। फैमिली कौन सा है, सोलनेसी। अगर आपको फैमिली पता है तो यू कैन इजिली पॉइंट इट आउट। ओके, चलो, so that is clear. Coming to next question, standard is the characteristic feature of flower, tulip, potato, indigofera, sunflower. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ओके, स्टैंडर्ड के ऊपर, इंडिगोफेरा। सो आई एम गिविंग यू 30 seconds, प्लीज टेक सम टाइम एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। You have to remember the family called as Papilionaceae. Okay, so Fabaceae is the family which has a older name called as Leguminosae. Leguminosae उस family का पुराना नाम है, नया name is Fabaceae. Okay, that Fabaceae has subfamilies. Okay, so it has Mimosae, Cisalpinosae, and then Papilionaceae. Clear? So in that Papilionaceae family, you will come across a species called as Indigofera, which is also called as indigo flower. ओके, जिसको इंडिगो फ्लावर भी कहते हैं। उसमें बेटा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, दैट इज पैपिलोनेशियस कोरोला। उसको कहते हैं पैपिलोनेशियस कोरोला या फिर वेक्सिलरी कोरोला। ठीक है, आज हम वो देखेंगे कि क्या है वो वेक्सिलरी कोरोला या फिर पैपिलोनेशियस कोरोला। ठीक है, सो स्टैंडर्ड उसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लावर। देखो, अब मैंने आपको बताना बेटा, इंडिगोफिला इज अ जीनस विद इन द फैमिली ऑफ फैबेसी। मैंने बताया ना, फैबेसी इज अ फैमिली नेम, बट जो इंडिगोफिला है वो बिलोंग होता है पैपिलोनेसी। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो, इट इज टर्म यूज टू डिस्क्राइब द लार्जेस्ट पेटल इन द फ्लावर। ओके, जो प्लांट का फ्लावर होता है उसमें लार्जेस्ट पेटल होता है ये। तो इस फैमिली को बेटा हम फैबेसी कहते हैं। इसको पुराना नेम भी था लेगुमिनोसे, यूजुअली इसको फैमिली फैबेसी ही कहते हैं। ठीक है, सो इंडिगो फेरा इज द स्पेशल फ्लावर जिसको इंडिगो फ्लावर भी कहते हैं, ये उसी फैमिली का एक बिलोंग पार्ट है। ठीक है, तो अब आप देखोगे बेटा कि ट्यूलिप एंड पोटैटो एंड सनफ्लावर दे डू नॉट हैव स्टैंडर्ड, उनको स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब एक जो बड़ा पेटल आता है फ्लावर में वो उसमें नहीं दिखता। तो किस में दिखता है? इंडिगो फेरा में दिखता है। अब इंडिगो फेरा फ्लावर कैसा होता है मैम? देखो ये आपको दिख गया, इसको हम कहते हैं वायलेट फ्लावर या फिर इंडिगो फेरा flower. Okay, indigo flower भी कहते हैं। अब if you see here in this flower, okay, there is a a special type of typical corolla, that is vexillary corolla या फिर papilionaceous corolla, which has a big large petal, we call it as standard, and two lateral petals, we call them as wing, and two smaller which are partially connected, we call them as keel. Standard, wing and keel, these are the parts of flower। ठीक है, तो ये फ्लावर के पार्ट्स होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आप, स्टैंडर्ड पेटल इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैबेसी। तो अब फैमिली फैबेसी में स्टैंडर्ड है। क्लियर? तो बेटा ये आप ना मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के चैप्टर में पढ़े हो। सो दिस इज बी आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 146। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। ओके, पोर्फाइरा, पॉलीसाइफोनिया, जेरिडियम और रेड डाल के, विक्सिया, मार्केंशिया, फ्यूनेरिया और लिवरवर्ट्स, साइकास, स्पाइनस एंड सिड्रस आर gymnosperms, xylotum, lycopodium, selaginella are club moss. Which are the correct statements? Okay, a little bit tricky, but if you remember exact examples, then it is very easy. Yes, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। ओके, आप थोड़ा ज्यादा भी ले लो इसको, कोई बात नहीं, बट आंसर करेक्ट निकालो। ओके, ओके, सो आई हैव गिवन यू इनफ टाइम। सो इनफ टाइम मैंने आपको दिया है बेटा, नाउ लेट्स डिस्कस हियर। So if you look at the statements, okay, A statement has Porphyra, Polycephonia, Gelidium, Gracilaria are the examples of Rhodophyceae. That is correct statement. Okay, abhi abhi just few minutes ago we saw that. Okay, so Rhodophyceae, red algae are the examples of this Porphyra, Polycephonia and the Gelidium. Okay, now, so bryophytes have two categories, liverworts and mosses. Okay, liverworts में examples आते हैं बेटा Rixia and Mercantia. Okay, Rixia, Mercantia are the examples of liverworts, whereas Funaria and Polytrichum, those are the examples of mosses. Okay, तो इसीलिए ये statement गलत है. Okay, Funaria belongs to moss, not a liverwort. ओके, नाउ साइकास, स्पाइनस एंड सिड्रस आर जिम्नोस्पर्म्स, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ओके, साइलोटम, लाइकोपोडियम एंड सेलाजिनेला आर क्लब मॉस। देखो बेटा, क्लब मॉस किसको कहते हैं? लाइकोप्सिडा क्लास के टेरिडोफाइट्स को हम कहते हैं। ओके, लाइकोप्सिडा। ओके, लाइकोप्सिडा क्लास ऑफ टेरिडोफाइट्स को हम कहते हैं बेटा क्लब मॉस, लाइकोप्सिडा। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि लाइकोप्सिडा में कौन आएगा। लाइकोप्सिडा में आएगा सेलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम। ओके, दीज टू कम अंडर लाइकोप्सिडा। ठीक है, दिस साइलोटम बिलोंग्स टू साइलोप्सिडा। ओके, साइलोप्सिडा, हियर पी इज साइलेंट। साइलोटम और साइलोप्सिडा वो दूसरा है। ठीक है, तो जो लाइकोप्सिडा है वो क्लबमॉस होता है, उसको कॉमनली हम लोग क्लबमॉस कहते हैं। तो जो साइलोटम है वो यहाँ पे क्लबमॉस में बिलोंग नहीं करता। ठीक है, वो साइलोप्सिडा में आता है। तो इसीलिए हियर यू कैन सी ए एंड सी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बी एंड डी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। सो यू हैव टू चूज विच आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो आपको करेक्ट वाले बताने हैं, तो करेक्ट वाले कौन से हैं बेटा? ए एंड सी। हेंस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, दैट इज ए एंड सी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट लीफ? ओके, लीफ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको बताना है। ठीक है, लीफ इज अ लैटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम,
It develops at the node and bears a bud in the axil. Leaves originate from root apical meristems and arranged in an acropetal order. Okay, there are most important vegetative organs of reproduction, which is a big comedy. A typical leaf consists of four main part A, B, C, D. ओके, तो फोर मेन पार्ट मैम कौन से ऑप्शन हैं क्या? नहीं, वो उसने नहीं बताया, उसने सिर्फ इतना बताया है कि फोर मेन पार्ट है। ओके, अभी आपको आंसर बताना है। बताइए आंसर। ओके, सो आई हैव गिवन यू एनफ टाइम। ठीक है, मेरे एनफ टाइम देने के बाद भी आपको, आपसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ यू आर गोइंग टू गिव मी अ करेक्ट आंसर। चलो, सो नाउ लेट्स डिस्कस हियर। यू हैव टू लुक एट द स्टेटमेंट्स व्हिच आर करेक्ट अबाउट लीफ। तो लीफ के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट्स होना चाहिए। So leaf is lateral, generally flattened structure borne on stem. So here there are statements, but देख लो यहाँ पे। So leaf is a lateral, definitely lateral. If you see a plant, okay, so plant has lateral leaves like this. Okay, यहाँ पे भी leaf, यहाँ पे भी leaf, again leaf like this. So these are lateral leaves. वो ठीक है। Generally flattened structure borne on stem. That is also correct. एकदम flat structure होता है, which are originated from the stem. Okay, so hence statement one is a correct statement. Okay, it develops at the node, बिल्कुल ये नोड पे डेवलप करेगा, एंड बेयर्स अ बर्ड इन इट्स एक्सेल। ओके, सो बेटा एक्सेल मतलब कुछ नहीं होता, वो जो सेंट्रल ऐसा रीजन होता है ना, उसको हम कहते हैं बेटा एक्सेल। ओके, अब बर्ड कहाँ पे होता है? देखो बर्ड यहाँ पे रहेगा। ओके, इसको भी एक्सेल कहते हैं, या फिर पीटियोल में भी ओरिजिनेट होगा तो उसको भी हम लोग पीटियोल का भी एक्सेल कहते हैं। ओके, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो इट डेवलप्स एट द नोड, तो यहाँ पे बीच में नोड्स रहेंगे, तो नोड्स का भी एक्सेल होगा, and it bears at the axil. This is also correct statement. So leaves originate from root apical meristem? Definitely not. Okay, if you remember, leaves or shoot system originate from the shoot apical meristem, not root apical meristem. Arranged in acropetal order, that I agree. बेटा मैंने आपको बोला है there are two types of orders. One is acropetal and another one is basipetal. Acropetal में क्या होता है बेटा? जो नीचे के leaves हैं वो elder होते हैं, मतलब बड़े होते हैं, they are first origin. ओके, जैसे ऊपर जाओ वो एंगर एंगर लीव्स आते हैं, जैसे ऊपर जाओ एंग लीव्स। कि दैट इज एक्रोपिटल ऑर्डर। आपको ये बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलेगा रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस में। ओके, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है बेटा? जो इनफ्लोरेसेंस में नीचे नीचे की तरफ बूढ़े बूढ़े फ्लावर्स होते हैं, जैसे अब ऊपर जाओ एंगिंग फ्लावर्स होते हैं, मतलब दे हैव ओरिजिनेट लेटर। जो ऊपर वाले हैं वो लेटर ओरिजिनेट हुए हैं, इसको हम कहते हैं एक्ट्रोपिटल सक्सेशन। ओके, विच इज सीन इन रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। सिमिलरली साइमोस इनफ्लोरेसेंस में बैसिपिटल ऑर्डर देखने को मिलता है। बैसिपिटल में जो फर्स्ट ओरिजिनेटेड इज अ बिगर फ्लावर। ओके, वो बिगर फ्लावर होता है या फिर ओल्डर फ्लावर होता है, जो साइड्स में होता है वो यंगर फ्लावर्स होते हैं, इसको हम कहते हैं बैसिपिटल। इसको हम कहते हैं बेटा एक्रोपिटल। ठीक है, तो जैसे लीव्स होते हैं बेटा, लीव्स भी यूजुअली एक्रोपिटल ऑर्डर ही होते हैं, बट इट इज डेफिनेटली नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टम, हेंस इट इज रॉन्ग। Okay, so they are the most important vegetative organs of reproduction. For reproduction, no. रिप्रोडक्शन के लिए लीफ का बिल्कुल कोई काम नहीं है, वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस करते हैं। दे प्रिपेयर द फूड। अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ फोर मेन पार्ट? नो। ओके, उसका मेन पार्ट देखिए, दैट इज मिड्रिप। ओके, मिड्रिप होता है, दैट इज वन वन इंपॉर्टेंट वेरी मेन पार्ट। और फिर आप लेमाइना भी लो तो दो इंपॉर्टेंट मेन पार्ट्स होते हैं। ओके, चार तो कोई नहीं होते लीफ में, चार मेन पार्ट्स बिल्कुल नहीं होते, एक हो सकता है मिड्रिप। एक से ज्यादा आप काउंट करो तो एक मिड्रिप रहेगा, एक दूसरा लीफ ब्लेड या फिर लीफ लेमाइना रहता है, बस। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे देखना है 151 का क्वेश्चन में कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। यू हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सो 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। Yes, happy mood. Do you have any doubts here? So if you see the solution has 1 and 2 that are correct about leaves. Leaves originate from the shoot apical meristem, that I have already told you, which are arranged in acropetal order. That is true. Okay, so older ones are below and the newer ones or the younger ones are above.
Okay, so leaves are the most important vegetative organs for photosynthesis but not for reproduction. Okay, chalo, so answer is A. Clear? Next question. What happens in metagenesis of obelia या फिर जेलीफिश, जो आप जेलीफिश कहते हो या फिर ओबेलिया कहते हो, तो उसमें क्या हो रहा है यहाँ पे? Polyp produces medusae sexually, medusae produces polyp sexually, polyp produce musae asexually, musae produce polyp asexually. यस, बताइए, विच डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर हियर? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आया हुआ है, बहुत सारे मॉक पेपर्स में आपको मिलेगा। ओके, हमारे एआईटी में भी अभी शुरू हो जाएगा, आप देखो। ओके, इसके ऊपर बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चंस आएंगे, मेटाजेनेसिस ऑफ ओबेलिया। ओके, सो बेटा ये डायरेक्टली दिस इज टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। एनसीईआरटी ने क्या बताया है? Polyp produces medusae asexually and medusae produces polyp sexually. तो B and C जो है ना, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, whereas A and D are incorrect statements. Okay, again this is directly taken from NCERT. ठीक है, तो आप ये देखते ही बता सकते हो कि हाँ भाई, बी इज द करेक्ट आंसर, वेर बी सी ऑप्शंस आर करेक्ट, दैट मीन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे देखो बेटा, व्हेन वी टॉक अबाउट नाइडेरियंस, okay, so they exhibit to both generation, that is alternation generation, we call it as metagenesis. The polyp produces medusae asexually and medusae form polyp sexually, that is an example for obelia. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर्स ऑफ मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस हैज बीन आस्क्ड अगेन एंड अगेन। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आप थोड़ा स्टेटमेंट्स के ऊपर ध्यान दीजिए। इन बोथ फ्रूट मीन्स मैंगो एंड कोकोनट इज अ ड्रूप, endocarp is edible in both, mesocarp in coconut is fibrous and in mango it is fleshy. In both, fruit develops from monocarpellary ovary. Select the correct options from below. Options are given here, A, B, C, D. So you have 30 seconds. आपके पास 30 seconds है. You look at the statements and option and please tell me in the chat. अब मुझे chat में बताइए कि कौन सा आंसर करेक्ट है. Okay? Yes, Neha, you can answer in the chat box. Okay, you can answer me in the live chat. Okay. So if you see here, this is, directly taken from NCRT, from the class 11th NCRT, page number 76. Okay, so the topic fruit, you have to refer the topic fruit. Here, if you see, in mango and coconut, the fruit is called as drupe. So, दोनों ही fruit को हम drupe कहते हैं. They develop from monocarpellary superior ovaries and they are one-seeded. Okay, तो इसमें क्या आपको पता चला कि स्टेटमेंट वन भी आपका ठीक है, एंड देन स्टेटमेंट जो फोर है ये भी बिल्कुल ठीक है. ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स. तो इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर thin epicarp, middle fleshy and edible mesocarp and an inner stony hard endocarp. ओके, सो अब यहाँ पे देखिए, whereas in coconut which is also a drupe where mesocarp is fibrous. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा, if you see the coconut here mesocarp is fibrous. Okay, it is completely fibrous. Okay, whereas यहाँ पे जो mesocarp है it is edible. ये edible होता है, जो हम लोग मैंगो में खाते क्या है बेटा, जो उसका होता है ना फ्लैश, तो फ्लैश इज फ्रॉम द mesocarp ओनली. आपको समझ में आ रही है मेरी बात? तो अभी यहाँ पे देख लिया आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको क्या दिखेगा कि एंडोकार्प इज एडिबल इन बोथ, ये गलत है. ठीक है, एंडोकार्प एडिबल नहीं है. देखो अभी एंडोकार्प मैंगो में क्या है, ये सीड है. ओके, तो ये एडिबल होता है क्या? नहीं. कोई बीज खाता है आम का? नहीं. लेकिन यहाँ पे देखो हम लोग खाते हैं एंडोकार्प, दैट इज मलाई. ओके, एंडोकार्प जो है कोकोनट में एडिबल है बट मैंगो में नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया. प्लस मीसोकार्प इज कोकोनट, कोकोनट इज फाइब्रस एंड मैंगो में फ्लेशी है, ये बिल्कुल ठीक है. तो कितने स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हो गए? 1, 3 एंड 4. ओके, सो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.
ओके, चलो. So here if you see 171, which of the following statement is or not true? In Urochordata, notochord is present in larval tail. In Cephalochordata, notochord extends from head to tail region. Branchiostoma belongs to Hemichordata. Only one class of living member, that is class Cyclostoma, represents the superclass Agnatha, which is lacking jaws. तो बेटा ये चार स्टेटमेंट्स हैं. इजी स्टेटमेंट डायरेक्टली टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी, कि बिल्कुल डायरेक्टली एनसीईआरटी से निकाले हुए स्टेटमेंट्स हैं. ओके, तो अब बताइए यूरोकॉर्डेटा जो है बेटा, इसमें नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होता है बट ओनली इन लार्वल टेल. ओनली इन लार्वल टेल, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. ठीक है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन लार्वल टेल. इन सेफालोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, ये भी बिल्कुल ठीक है. देखो इसीलिए तो नेम पड़ा ना सेफालोकॉर्डेटा, सेफालो मीन्स हेड. ठीक है, हेड से ओरिजिनेट होता है हमारा नोटोकॉर्ड, के हेड से ओरिजिनेट होके टेल तक एक्सटेंड होता है. ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. ब्रांकियोस्टोमा बिलोंग्स टू हेमिकॉर्डेटा, नो बेटा, हेमिकॉर्डेटा में दो एग्जांपल्स आता है, आपको पता है वो, कि बिलानोग्लॉसिस एंड सेकेनोग्लॉसिस. तो वो हटा के जो ब्रांकियोस्टोमा है वो सेफालोकॉर्डेटा को बिलोंग होता है. ओके, ब्रांकियोस्टोमा इज एन एग्जांपल ऑफ सेफालोकॉर्डेटा. ओके, हेमिकॉर्डेटा का एग्जांपल तो बिल्कुल नहीं है. Only one class of living members, class Cyclostoma, represents the superclass Agnatha. Agnatha आपको पता है बेटा, it is a class, superclass where it lacks the jaws. jaw नहीं होता उनके पास, जो हम बोलते हैं ना jaw, this is jawless organism. Agnatha में जो आते हैं, that is Cyclostoma, these are jawless organisms. Okay, this is only one class of living member. This is also true. So कितने statements correct हो गए? Statement 1, second and fourth are correct. ठीक है, जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि ब्रांकियोस्टोमा डज नॉट बिलोंग टू हेमिकॉर्डेटा, इट बिलोंग्स टू सेफालोकॉर्डेटा. ओके, हेमिकॉर्डेटा में जो एग्जांपल्स आते हैं आपको पता है बेटा. ओके, बेलानोग्लॉसिस एग्जांपल है, याद रखिए उसको. ठीक है, तो अब यहाँ पे आंसर क्या है? यू हैव टू चूज विच इज नॉट करेक्ट. आपको जो गलत है वो चूज करना है. सी गलत है, दैट इज 3, तो यहाँ पे सी का ऑप्शन आपने चूज कर दिया. दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया. ये मुझे करना था सोल्यूशन में, ये पता नहीं यहाँ पे कहाँ से आ गया डायग्राम, बट कोई बात नहीं. आप देखिए, डायग्राम भी देख लो तुम, ऑप्शंस भी है, क्वेश्चन भी है, फिर भी आप देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. अच्छा, ये डायग्राम नहीं दिया है क्वेश्चन में एंड ऑप्शन में, मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए रखा है बस. ठीक है. Okay, I'll read the statement. The leaf is attached to the stem by petiole, while the leaf base help hold the blade to light. A typical leaf consists of three main parts: pulvinus, petiole, and lamina. A bud is present in the axil of petiole of compound leaf, but not axil of the simple leaf. The lamina is the green extended part of the leaf with veinlets. मुझे पता है आपको डिफिकल्ट लगेगा, आई एम क्वाइट श्योर ऑफ इट, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप इसका आंसर करें. ओके, ट्राई टू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलो हम लोग डिस्कस करते हैं. द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय petiole, हाँ ये ठीक है. while the leaf base hold the blade to light, नहीं ये गलत है. जो इसको कहते हैं बेटा लीफ बेस, एक मिनट, ये जो होता है ना इसको हम कहते हैं लीफ बेस. कि लीफ बेस हमारा लीफ को लाइट में होल्ड करके रखा है, ब्लेड को. ब्लेड मतलब बेटा ये सारी चीज पूरी. ओके, लीफ का जो पूरा पार्ट है उसको लीफ ब्लेड कहते हैं. दिस इज नॉट द वन विच इज होल्डिंग, पीटियोल इज द वन विच इज होल्डिंग. ओके, तो पीटियोल अटैच हुआ है एंड पीटियोल ही होल्ड कर रहा है, नॉट द लीफ बेस, हेंस ए इज इनकरेक्ट. Typical leaf consists of three main parts: pulvinus, petiole, and lamina. No, petiole and lamina are correct. petiole कौन है बेटा? ये स्टॉक है जो लीफ को पकड़ के रखा है, ये ठीक है. क्योंकि लेमाइना जो ये पूरा पार्ट है ये भी ठीक है. लेकिन पल्वाइनस जो है ना बेटा, ये एक स्वोलन पार्ट होता है एट द बेस ऑफ द पीटियोल. आप समझ लो, यहाँ पीटियोल है, पीटियोल के बेस में अगर स्वोलन स्ट्रक्चर है तो उसको हम कहते हैं पल्वाइनस. जो पल्वाइनस होता है ना, वो हर प्लांट में नहीं होता, हर स्पीशीज में नहीं होता, हर फैमिली में नहीं होता, कुछ स्पेशलाइज्ड फैमिलीज में ही आपको दिखता है. ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दे दूं आपको, हाइबिस्कस. ओके, हाइबिस्कस की फैमिली में बेटा आपको पल्वाइनस पीटियोल देखने को मिलेगा.
ठीक है, बट ये मेन पार्ट ऑफ लीफ है? नो, बिल्कुल नहीं। बट इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पीटियोल ऑफ कंपाउंड लीफ, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ सिंपल लीफ। ये भी गलत है, क्यों, मैं आपको बताती हूँ। बट इज प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ पीटियोल ऑफ बोथ कंपाउंड एंड सिंपल लीफ। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ के एक्सिल से ही बड ब्लड सॉरी बड ओरिजिनेट होता है। ये इसलिए बताया है कि सिंपल लीफ ओरिजिनेट नहीं होता, वो जो गलत है। कंपाउंड लीफ से भी ओरिजिनेट होता है, सिंपल लीफ से भी ओरिजिनेट होता है, बड फ्रॉम देयर एक्सिल। सो सी इज इनकरेक्ट। ना, द लेमाइना इज द ग्रीन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विथ वेनलेट्स। बिल्कुल, देखो ये पूरा लेमाइना है, ये लीफ ब्लेड है, इसमें ग्रीन एक्सटेंडेड पार्ट होता है जिसमें मिड मार्जिन होता है, ओके, दैट इज मिड रिब होता है, मिड मार्जिन, एंड वेनलेट्स से उसे सराउंडिंग किया जाता है। ठीक है, सो डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम ऑफ एनिमल्स। कुछ एनिमल के डायग्राम्स दिए हैं ए बी सी डी, यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे दिया है बेटा, ए ऑल आर इनवर्टिब्रेट्स, बी ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सी ऑल आर स्यूडोसिलोमेट, डी ऑल आर मेराइन। के ऑप्शंस हैं, आप देख के बता सकते हैं, वेरी इजी। ठीक है, ये पहले कौन सा क्या है तुमको वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, विच डायग्राम इंडिकेट्स व्हाट, फर्स्ट यू नीड टू नो दैट। तो उसको जानने के लिए यहाँ पे दिया है, देखो, जो ए है वो जेलीफिश है जिसको ऑरिलिया भी कहते हैं। ठीक है, एंड जो बी है उसको लोकस्ट कहते हैं। ठीक है, सी इज चिलॉन एंड डी इज कार्टला। ओके, ये है हमारे पास। अब देखो बेटा, जो ए बी है ये दो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, वेरा सी एंड डी आर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो इसीलिए ऑल आर इन्वर्टिब्रेट्स ऑप्शन को आप हटा दीजिए। ठीक है, आपको देखो बेटा, आपको चिलॉन भी समझ में नहीं आया तो रोहू तो समझ में आता है ना, जो फिश ईटर्स हैं, बीच से एक बोन निकलता है, तो व्हाट इज दैट, वो इन्वर्टिब्रेट नहीं है, वर्टिब्रेट है। ठीक है, तो ए इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, ऑल आर इन्वर्टिब्रेट्स नहीं, ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ये भी रहा कॉमेडी वाली चीज, बेटा आपको पता है, जो ये फर्स्ट आप देख रहे हो ना, ऑरिलिया, ऑरिलिया बिलोंग्स टू डिप्लोब्लास्टिक, नॉट ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर इसने कहा ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो आपका ऑरिलिया है वो डिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, ऑल आर स्यूडोसिलोमेट, ये भी अटर रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एस्कल मिंथस के फाइलम वाले ही बेटा जो होते हैं वो स्यूडोसिलोमेट होता है, एस्कल मिंथस। आपको यहाँ पे कोई एस्कल मिंथस का एग्जाम्पल दिख रहा है? टेल मी एनी एग्जाम्पल ऑफ आजकल। नो, डेफिनेटली नॉट। आपको कोई भी यहाँ पे आजकल मिंथस नहीं दिख रहा है, तो ऑल आर सूडोसिलोमेट ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, दैट वन इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ कमिंग टू ऑल आर मेराइन, ऑल आर मेराइन बेटा ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो काटला है ये फ्रेश वाटर फिश है, जो काटला फिश है ना, तो काटला, रोहू, वो सारे फ्रेश वाटर होते हैं, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर है बेटा नन, दैट इज डी। तो यहाँ पे कोई भी करेक्ट गिवन डायग्राम का स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ऑल आर इन्वर्टिब्रेट्स गलत है, ऑल आर ट्रिपल प्लास्टिक गलत, ऑल आर स्यूडोसोलोमेट गलत, ऑल आर मेराइन गलत। अब यहाँ पे सोल्यूशन में आप देखिए, आपको समझ में आएगा। तो ए बी जो है वो इन्वर्टिब्रेट्स है, मैंने आपको बताया। ठीक है, जो ऑरिलिया एंड लोकस्ट है वो इन्वर्टिब्रेट्स है, मेरा सी डी आर वर्टिब्रेट, चिलॉन एंड कार्टला वर्टिब्रेट। ए इज ए सीलोमेट, मैंने बताया ना, ए सीलोमेट है। वेराज बी सी डी आर सीलोमेट्स। ठीक है, तो ये बी सी डी जो है वो सीलोमेट्स है। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं नेक्स्ट। डी जो है वो फ्रेश वाटर एनिमल है, मैंने बताया, काटला जो मछली खाते हैं वो बेटा फ्रेश वाटर की है वो। ओके, जो बी है वो टेरेस्ट्रियल है। ओके, बी जो है दिस इज टेरेस्ट्रियल। ओके, तो ये सब आपको समझ में आ गया, तो यहाँ पे आंसर इज नन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, given below is the diagram of stomatal apparatus in which the following are four parts labeled as A, B, C, D और correctly identified। अब आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। बेटा ये बहुत इजी है, इसको मैं टाइम नहीं दूंगी, बस साथ में करते हैं। समझ लो, ए जो है बेटा ये एपिडर्मल सेल है। ए इज एपिडर्मल सेल, वेरी इजी। जो बी है, बी इज अ सब्सिडियरी सेल। कि जो बी है बेटा, बी इज अ सब्सिडियरी सेल। ओके, सब्सिडियरी सेल हमेशा गार्ड सेल को सराउंड करके रखती है। ठीक है, तो सी जो है, सी इज स्टोमेटल अपर्चर, के सी इज स्टोमेटल अपर्चर। डी जो है दैट इज रेनिफॉर्म शेप और किडनी शेप, दैट इज गार्ड सेल। ओके, डी इज गार्ड सेल। तो अभी आप देखिए, ई एपिडर्मल सेल। ओके, ए इज एपिडर्मल सेल, ए सब्सिडियरी सेल,
गार्ड सेल, ओके, सी डी में एक आंसर है, ओके। बी गार्ड सेल लिखा है, तो ये हमको हटाना है, बी गार्ड सेल नहीं है, बी सब्सिडियरी सेल है। अब बाकी के चेक कर लो, सी सबसे स्टोमेटल अपर्चर बिल्कुल सही, डी गार्ड सेल बिल्कुल सही, हेंस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। ओके, डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 186 क्वेश्चन है। इन द गिवन बिलो डायग्राम ऑफ प्लांट्स सेलेक्ट द हेटेरोस्पोरस एंड वास्कुलर प्लांट। अभी अभी मैंने आपको बताया कौन से हेटेरोस्पोरस हैं, सेलाजिनेला, साल्विनिया। और वास्कुलर प्लांट कौन है, जो टेरिडोफाइट से ऊपर है, टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट वास्कुलर प्लांट्स, उसके बाद आएंगे जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है बहुत इजी क्वेश्चन है। ये सेलाजिनेला है ए, बी का साल्विनिया है, ओके, साल्विनिया है ये, जो बी है, ओके। और डी जो है ये बिलोंग्स टू जिम्नोस्पर्म्स, ये गिंको है, गिंको, दिस इज गिंको, इट बिलोंग्स टू जिम्नोस्पर्म। और जो सी है बेटा ये यूलोथ्रिक्स है, ये यूलोथ्रिक्स, ओके, यूलोथ्रिक्स इज अ अलगी, ओके, जो यूलोथ्रिक्स है वो अलगी है। तो अब आप इतना इजीली बता सकते हैं कि हेटेरोस्पोरस कौन कौन है, ए बी हेटेरोस्पोरस है, और वास्कुलर प्लांट कौन है, वो है डी, दैट इज गिंको। ओके, जो सी है ये अलगी है, यूलोथ्रिक्स, तो इसको आप कहीं पे भी ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो सी तो बिल्कुल ही रॉन्ग ऑप्शन है, सी बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है, ओनली ए बी ओनली ए डी भी बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर है बेटा ए। ओके, तो ए भी बिल्कुल सही है बिकॉज बोथ आर हेटेरोस्पोरस, एंड डी भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि डी जो है वो वास्कुलर प्लांट है, क्योंकि वो जिम्नोस्पर्म है। ओके, दैट स्पीशीज नेम इज गिंको, लेकिन सी इज इलोथ्रिक्स जो अलगी को बिलोंग करता है। देखो वही चीज यहाँ पे लिखा है, सेलाजिनेला साल्विनिया टेरिडोफाइट्स विच आर हेटेरोस्पोरस, इलोथ्रिक्स अलगी है, तो वो रॉन्ग ऑप्शन, गिंको इज अ जिम्नोस्पर्म। तो ए बी डी आर द करेक्ट ऑप्शंस हियर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Column 1 contains organisms where column 2 contains their excretory structures. Choose the correct match that forms the options given below. ठीक है, यहाँ पे कॉलम 1 में ऑर्गेनिज्म है, कॉलम 2 में बेटा देयर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको भी मैं ज्यादा टाइम नहीं देने वाली। मैंने जब आपको पढ़ाया था मैंने आपको बताया था। ठीक है, फ्लेम सेल्स किसमें होते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थस में होता है। ठीक है, रेनेट सेल किसमें होता है, कि प्रोबिसिस ग्लैंड किसमें होता है, सारी चीज मैंने आपको बताई होगी। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स किसमें होते हैं, एवरीथिंग इज क्लियर। अभी बस आपको चूज करना है, ओके, बस आपको चूज करना है, बस साथ साथ करें। ओके, हनी बी क्लियर, माल्फिजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। एंड देन बुलानो ग्लासेस, ओके, जो बुलानो ग्लासेस है दैट इज हेमिकॉर्डेटा, बेटा ये आएगा प्रोबोसिस ग्लैंड। ठीक है, प्रोबोस्किस भी कह सकते हैं, प्रोबोसिस भी कह सकते हैं, जो बेलानो ग्लॉसस है वो आर में जाएगा। ठीक है, और अर्थवर्म बेटा, अर्थवर्म इज नेफ्रीडिया, के अर्थवर्म है वो नेफ्रीडिया है। जो फ्लैटवर्म है वो फ्लेम सेल्स हैं, कि मैंने बताया था ना, जो प्लैटिहेल्मिंथस फ्लैटवर्म्स वो तो फ्लेम सेल्स हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आप देख लो। तो अभी हम इसको चेक करते हैं, ए क्यू किधर है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। ओके, ए क्यू, ए क्यू, चलो बी आर, बी आर हमको चाहिए। यहाँ पे बी पी लिखा है तो इसको भी हटा दो, सी को भी हटा दो। ओके, बी जो है वो बिल्कुल पी नहीं हो सकता, बेलानोग्लॉसस जो है वो प्रोबोसिस ग्लैंड है। ठीक है, एंड बाकी आप देख लो, अर्थवर्म, नेफ्रीडिया, फ्लैटवर्म, फ्लेम सेल्स। सो डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल। ओके, चलो, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द किंगडम। ओके, तो बेटा ये क्वेश्चन EIT 1 में भी पूछा गया था और मैंने डिस्कस भी किया था, फिर मैंने इसको लिया है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन एनिमिलिया द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रोपिक, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। क्यों, क्योंकि इन एनिमिलिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रोपिक, एनिमल्स डिपेंड होते हैं दूसरों पे। Okay, so in Monera, nuclear membrane is present. No, in Monera, nuclear membrane is absent. Hence the name prokaryote. Karyo means nucleus, pro means primitive. Okay, जो primitive nucleus होते हैं उनको आप Monera की कैटेगरी में डाले हो, that is nuclear membrane is absent. In Protista, cell type is prokaryote. बिल्कुल wrong. जो Protista है बेटा, they are यूकैरियोटिक। ओके, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक जो आते हैं उनमें प्रोटिस्टा को डाला जाता है। ठीक है, उनको तब इन प्लांटे सेल वॉल इज प्रेजेंट, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांटे में देखा जाता है, एनिमल्स में नहीं देखा जाता। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो आपको यहाँ पे चूज करना है विच वन इज करेक्ट, 4 इज करेक्ट।
ठीक है, तो डी ओनली, दैट इज फोर ओनली, डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर किसी को डाउट है कोई और क्वेश्चन में, तो वो अभी मुझे पूछ सकता है। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं मीटिंग। अब ये देखो, ये सोल्यूशन है यहाँ पे, जैसे वन इज इनकरेक्ट, मुनेरा भी इनकरेक्ट, प्रोटिस्टा इनकरेक्ट, जो लास्ट है वो करेक्ट है, दैट इज इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज सेल वॉल। ठीक है, तो डी इज द आंसर। क्लियर, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द डिस्कशन सेशन। अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है। ओके, तो टोटल सर्व क्वेश्चन में, पूरे 100 क्वेश्चंस में हमने यहाँ पे किया है 22 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं। इसके अलावा कोई और क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, so thank you so much for attending the discussion session. We will see in the next month where we will talk about the EIT paper 3. Okay, all the best.